नमस्कार, मैं जय भारत शर्मा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं और किन गजेटेड ऑफिसर के पास जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। और एक और बहुत बड़ी बात, नोटेरी क्या होती है। जी, आज इन्हीं चीज़ों को जानेंगे एक छोटी सी वीडियो के थ्रू, और अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि what do you mean by the gazetted officers and other thing. Let me tell you very clearly, any officers from Indian government service can be come under the category of gazetted officer. And the gazetted officer, what he does, he just authorizes the witness for the document verification, and is a high level public employee where he verifies and attests the important attested copies. सो ये तो चीज़ हमारे पिक्चर एकदम क्लियर होगी हमारे पास। नाउ व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नोटेरी एंड अटेस्टेशन। सो नोटेरी एंड अटेस्टेशन के जब बेसिक डिफरेंस के ऊपर आते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में एक गहन में एक सबसे हमेशा सवाल आता है कि what is the basic difference between the notary and attestation. So let me tell you very clearly, attestation is basically एक ऐसा टर्म है जो कि एक तरह से विदाउट एनी ट्रांजेक्शन और बिना थर्ड पार्टी के टू पर्सन के बीच में होता है, जो ये वेरीफाई करता है कि टू पर्सन के बीच में लीगल डॉक्यूमेंट है, वो पर्सन सही है, पर्सन ऑथेंटिकेट पर्सन है, एंड इट कम अंडर द and it does what it come under the it come under legal recognition, and it come under the section 57 of the Indian Evidence Act. Whereas we talking about the notary, where the notary is an understanding about the fact which has been notarized. We can say that एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग दो पार्टीज के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है थर्ड पार्टी के थ्रू, एंड ये पता करने के लिए साइनिंग अथॉरिटी ऑथेंटिकेट है या नहीं। एंड किसी एक तरह से एक बहाना भी होता है नोटेरी ये पता करने का कि इनमें किसी तरीके के फ्रॉड केस को रोकना और ये इंश्योर करना कि साइनर इज ऑथेंटिकेट और नॉट. So this is a very good medium between the notary and attestation. So move towards the next one, and that thing we should be know that where is attestation required. So this is a very good question. We know that, as we know that our President of India or the Governor of India provides the power and authority to a gazetted officer to use the stamp paper. और वी कैन से दैट इन ए सिंपल वे, वी कैन से दैट सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि द पर्सन will be a called gazetted if the name has been published in the Gazetted of the India or the Gazetted of any state government. So this thing very clearly it is mentioned. एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली वेयर से अटेस्टेशन रिक्वायर्ड कहाँ होता है. बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जब अप्लाई करते हैं हम किसी, तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर बीन अटेस्टेड. और फॉर एनी टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को लगा रहे हो, सर्टिफाइड कॉपीज़ लगाएं, फ़ोटो अपनी फ़ोटो को वेरीफाई करने के लिए, और फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर की किसी सर्विस को लेने के लिए वी नीड द अटेस्टेशन. सो दिस आर द बेसिक नीड्स दैट वी रिक्वायर्ड फॉर द अटेस्टेशन. So move towards the next one, that is the classes of the gazetted officer. So let me clearly tell you very clearly, this thing is very fair enough to say that the gazetted officer does not necessarily to be an employee of an government. It is this thing which has been mentioned over here, but we clarify this one. They are the classes of the gazetted officer. We should be known this thing कि कुछ क्लासेस बनाई गई gazetted officer की, जिनके अंदर उनको चार ग्रुप में डिवाइड किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. वी कैन से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी. तो वी नो दैट ऑफिसर्स हु कैन अटेस्ट द डॉक्यूमेंट आर coming under the group A and group B, and officers who cannot attest the document are coming under the group C and group D. So important thing which is here is very clearly important things. The document that ever to be attested should be in the blue ink only. Very important point. Another one, no fees for attestation done by any gazetted officer. कोई gazetted officer आपसे attested करने की फीस नहीं ले सकता. Name, designation and the contact number of gazetted officer. Name, designation and the contact number of gazetted officer should be mentioned, clearly mentioned. As we know, let me have a brief look towards what are the different category of the group A and group B. As you know, the group A and group B person are only who can attest the document. So armed force, as you know that armed force, doctor, engineer, drug controller, state and governments and universities person can attest the document. Whereas move towards the group B, it is very clearly mentioned that तहसीलदार हो गए, lecturers हो गए,
section officers हो गए, block development officer come under the group B category. So now we have a detailed look towards the different classes of the gazetted officer के एक detailed look पे देखते हैं हम लोग. तो detailed look क्या है उसको जानते हैं हम लोग. तो पहला detailed look हम देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कि क्लासेस 1 का, अगर हम क्लासेस 1 की बात करें तो हम क्लास 1 या ग्रुप ए में देखेंगे हम लोग कि हम वी विल हैव, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आर्म फोर्स ऑफिसर्स, जितने भी आर्म फोर्स ऑफिसर्स होते हैं वो इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं. एंड वाइस चांसलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईपीएस, ड्रग कंट्रोलर्स, आईएएस, पेटेंट एग्जामिनर्स, मजिस्ट्रेट्स एंड जुडिशियल सर्विसेज, ये सारे क्लास 1 कैटेगरी पर्सन होते हैं जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड आसानी से कर सकते हैं. मूव टूवर्ड्स द क्लास बी, क्लास 2 कैटेगरी की बात करें हम लोग तो सेक्शन ऑफिसर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स, हेडमास्टर इन द गवर्नमेंट हाई स्कूल, chief pharmacist, superintendent of excise and custom, state civil services, these all are come under the class B or the class 2 category. So we have to look towards the class 3rd, और class 3rd में आते nurses, TTE, telephone operators, head clerks and the police constables. They are coming under the category of class 3rd, where we not having the power to attest any document. Come to the class 4th category, that is class 4th. So in class 4th we can see that the sweepers, trackman, peons, gardeners, drivers and the attenders are coming under the category of the class 4th. So by this video we can have a clear look towards all the categories, classes of gazetted officers in India. So as if by this we have a clear look towards the classes, we have a clear look where when we need the attestation is required, what is the gazetted officer, all things we have go through by this video. Hope you like this video. If you like it, kindly subscribe and don't forget to subscribe my channel and promote me by to encourage this type of videos. Have a good luck. Jai Hind, Jai Bharat.